तो स्टार्ट करबा हमर आज रो क्लास समस्त जॉइन हे जा जल्दी जल्दी। तो आज हमर ओटीटी एग्जाम के असिस्टेंट टीचर एठी लिखा होई किंतु इट्स आल्सो हेल्पफुल फॉर योर बीएड तमरा एसएसबी टीजीटी जहाँ भी जो थे जो एग्जाम रे आम लर्निंग थ्योरीज अटेम्प्ट करुचे से ओटीटी हो से सीटेट हो से ओएसटीटी हो जो भी एग्जाम हो आमर हेल्पफुल हो। तो समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा सूर्यस्नाता एंड झरणा समस्ते जॉइन हो गले आम स्टार्ट करबा हमर क्लास जो थ्रू कि आज पियाजेट एवं भाइगट्स्की विषय रे ही आमे डिस्कशन करबा। आरंभ करूचे आमे लर्निंग थ्योरीज रो क्लास जो थ्रू पियाजेट एवं भाइगट्स्की थ्योरी पई अछि। प्रणाम प्रणाम सीमा सॉरी सीमा कोजी साइना क्लास Ajira first question, according to Piaget, what is the process of taking in new information into our already existing schema is known as equilibration, assimilation, organization, accommodation. कौन अब पिले गुड आफ्टरनून। According to Piaget, what is the process of taking new information to our already existing schema? 1 2 3 4 5 6 7 8 केते आंसर आछी मु देखु 9 10 11 जो छुआ बेले एबीसीडी गणंते नि मु सेया गणुची। यस ऑप्शन भला से पड़े गला जैसे कौन होबो एसिमिलेशन। तो पियाजेट तांकर थ्योरी रे बहुत सारा जिंस कहि छंती जेमिति कि स्कीमा एसिमिलेशन अकोमोडेशन सब विषय रे से तांको थ्योरी रे डिस्कशन करि छंती। तो स्कीमा कहिले हमें फर्स्ट बुझिबा स्कीमा कहिले कोन देन हमें कोन करबा सब वन बाय वन डिस्कशन करबा। तो स्कीमा कहले हमें बुझुचे कौन ना स्कीमा होउछि हमर गोटे मेंटल स्ट्रक्चर व्हिच एक्जिस्टिंग ऑलरेडी एक्जिस्ट इन ह्यूमन माइंड। ओके देन आसला हमर कौन ना ए कांसेप्ट एसिमिलेशन मीन्स कौन ना हमर एक्जिस्टिंग स्कीमा जहा अछि ता सहित हमें कौन करबा फिट करबा न्यू इन्फॉर्मेशन हमर न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करबा एवं हमें लर्न करबा। फॉर एग्जांपल मु जदी कहूछि गोटे मु देखिछि जेमते कि हमें कहू हमें देखिछु कोन ना बिलेई आम घरे डे टू डे लाइफ रे छुआ बिलेई देखिला तो सी जते बेले बाघ देखिबा को जाउछि से सेटा फास्ट बिलेई कहूछि से सांग सांग सेठी कनेक्ट करि परछि। हां बिलेई रमती निस थिला खाली साइज रे डिफरेंस अछि किंतु सेही डिफरेंसटा छुआ बुझी पार नाही से सांगे संगे एसिमिलेट करिया को लागुछि से जो बाघडा को से बिलेई कहया को लागुछि। तो तापरे कोन होछि ना हमर कोन अकोमोडेशन कोन ना जते बेले एसिमिलेशन अकोमोडेशन माने आमे हम एक्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करूछे और आमे टोटली चेंज करि दोउछे टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करिकि हम स्कीमा रे फिट करबा को लागुछे दैट इज कोन यस बीएड पाई मध्ये एटा हेल्पफुल हबो। तो ताकू आमे कहि परिबा कोन ना अकोमोडेशन आमे अकोमोडेट कले मॉडिफाई कले हम एक्जिस्टिंग स्कीमा बा आमे टोटल ताकू चेंज कले। ओके तो जेमति कि मु कहली बिलेईटा को आमे देखिचे बिलेई जानिले बाघ को देखिके बिलेई कहले दैट इज एसिमिलेट कले एवं जेते बेले हम पेरेंट्स कहउछन्ती ना ना एटा बाघ ठारू बड़ बाघ भलिया देखिबा सॉरी बिलेई ठारू बड़ बिलेई भली देखिबा को ताकू आमे बाघ कहउचे आमे संगे संगे कोन करबा ना मॉडिफाई करि देले जोटा को आमे कहउचे अकोमोडेशन। ओके बुझियला
देन इक्विलिब्रेशन कौन ना एसिमिलेशन ए अकोमोडेशन भितर तालमेल को बैलेंस करबा प्रोसेस बैलेंसिंग प्रोसेस को आम कहूचे इक्विलिब्रेशन ओके नेक्स्ट कौन ना at which stage of cognitive development do children begin to understand the concept of conservation sensory motor pre operational concrete operational ना formal operational प्रणाम गुड आफ्टरनून समन्विता वंदना नोटिफिकेशन आसुनी ओके at which stage of cognitive development do children begin to understand the concept of conservation very good राइट आंसर हम कौन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ताले कुह सेंसरी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स तक कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर गुड आफ्टरनून वेरी गुड सेंसरी मोटर पीरियड 2 years सब्जेक्ट परमानेंस डिफर्ड इमिटेशन तो ये कौन ना 0 to 2 years रहिला इथरे हमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन आसिला तो आमे जदि ऑब्जेक्टटा छुआ मोहरु नेई जाउछे किंबा कोन करूछे ना आमे कोन करूछे डिफर्ड इमिटेशन मीन्स मु जहाँ इमिटेट करूची छुआटा देखिला किंतु से सांगे सांगे सेटा इमिटेट करूनी किछि टाइम परे से जिंसटा आफ्टरवर्ड इमिटेट करूची देन आसला प्री ऑपरेशनल स्टेज कोन ना 2 to 7 years पर्यंत हबो यार कैरेक्टरिस्टिक गुडा कोन ना इरिवर्सिबिलिटी सेंट्रेशन एनिमिज्म इगोसेंट्रिज्म आ कौन आसी परिबो यस सेंसेस आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजेट एक्स कौन हम इरिवर्सिबिलिटी सेंट्रेशन एनिमिज्म इगोसेंट्रिज्म तापर हमर कंक्रीट ऑपरेशनल आसला केते 7 to 11 years पर्यंत एइथरे कौन आसीबो ना क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन सेरिएशन तापरे कौन आसीबो ना डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांजिटिविटी रिवर्सिबिलिटी लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल कौन ना 11 onwards जो थे कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आसीबो ओके बुझियला नेक्स्ट आसला कौन ए चाइल्ड हु बिलीव्स दैट ए टॉल ग्लास of water contains more than short wide glass
even after seeing the water flowed from one to other. This demonstrating reversibility, centration, object permanence na hypothetical reasoning. कौन हवा? A child who believes that a tall glass of water contains 3 नंबर ए हवा ना 3 नंबर सी हवा सॉरी बी हवा कोडा हवा रिवर्सिबिलिटी छाड़ा ग्लास तो जहाँ है आउ थे भाव A child who believes that a tall glass of water contains more than a short wide glass even after seeing the water flowed from one to other is demonstrating. तो यहाँ सेंट्रेशन हम रिवर्सिबिलिटी कौन जोटा फेरी पारिबनी से भाबिबो सिना सेटा रिवर्सिबिलिटी तो रिवर्सिबिलिटी नुह एठी रिवर्सिबिलिटी हेतिले कंक्रीट हे जिवो एठी इरिवर्सिबिलिटी हबा कथा जदी तने जिंस बुझी पारु नाही तो सेंट्रेशन माने से गोटे जिंस को ही फोकस करूची से प्रात्रटा को ही फोकस करूची कंजर्वेशन को ही फोकस करूची तार रिवर्सिबिलिटी हो नाही ओके नेक्स्ट आसला कोन ना In Piaget theory, object permanence is a landmark achievement of which stage? Concrete operational, sensory motor, ना formal operational, ना pre-operational. Obviously, एबे ही हमें discussion करी के आसे थे कि Piaget को theory रे कौन हबो ना concrete operational, sorry, आमर object permanence टा होची sensory motor, जोटा कि 0 to 2 years age भीतरे belongs करूची. Okay? नेक्स्ट आसला कि व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ना एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग मोटर कोऑर्डिनेशन विथ सेंसरी इनपुट ना सिंबॉलिक प्ले एंड लैंग्वेज ना लॉजिकल थिंकिंग लिमिटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट yes obviously abstract and hypothetical deductive reasoning option A is the correct answer. Next asila कौन ना egocentrism, the inability to see a situation from another person's point of view is most prevented in pre-operational stage, sensory motor stage, formal operational stage, concrete operational stage. Obviously आमर egocentrism जोटा कि आमे केवल आमर own points of view रे बुझी थाउ rather than others point of view, that is called pre-operational stage. Okay. Next asila कौन which term describe the mental framework that organizes and interprets information? Schema, ना conservation, ना adaptation, ना operation. Yes, mental framework that organize and interpret information, that is called schema. आमर mental structure. नेक्स्ट जीवा कौन 8 नंबर को when a child changes their existing schema of a dog, exclude a sheep, after being corrected they are engaging in animism, accommodation, object permanence ना assimilation. Very good. Option B, accommodation. Next, Shiva,
Now, the tendency of pre-operational children to attribute life-like qualities to inanimate objects. Example: the sun is angry is called transductive reasoning, egocentrism, artificialism, na animism. कोट हबो 9 नंबर सुभाषिस कहले 9 नंबर बी ढोक ना एपटे गोटे मारिमी अते खुशी रे यस ऑप्शन डी एनिमिज्म जोटा हमर ई एनिमेट जिंसटा ठीक अछि आनिबा तो इन एनिमिज्म जिंस जो गुडा रहउछि सही इन एनिमिज्म जिंस को भलो भाबिबा एवं भलो भाबरे स्वीकार करबा को हमें कहउछे एनिमिज्म नेक्स्ट कोन ना Piaget's theory is often described as constructivist because it suggests learning is just a series of conditional responses. Now, knowledge is passively received. Now, development is solely determined by genetics. Now, children actively build their own understanding. Very good. Option D. Now, children actively build up their own understanding. Next, now, according to Vygotsky, the primary function of private speech is young children is to exhibit cognitive immediately and egocentrism, seek attention from caregivers and peers, now guide their own thinking and regulate their action, overcome social anxiety. कौन होगा? Very good. Now guide their own thinking and regulate their action. Next देखो a teacher provides the student with a partially completed graphic organization to help them to analyze a complex poem. As the student gain confidence, the teacher gradually removes this support. This instructional strategy is an application of reciprocal teaching, scaffolding, discovery learning na operant conditioning. ये जेटी पाई ही होउछि लर्निंग थ्योरीज होउछि 12 नंबर भी कौन ना स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग माने कौन ना टेम्पोरारी हेल्प आमे किछि टेम्पोरारी पीरियड पई आमे ताको सही जिंस रे सही अचीवमेंट लेवल अटेंड करबा पर्यंत टेम्पोरारी हेल्प बा सपोर्ट प्रोवाइड करि थाउ किए प्रोवाइड करि थाए ना प्रोवाइड करथानी एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स तो सही एमकेओ जो प्रोवाइड करथानी आमे साकू कोन को ना जेपीटी सिस्टम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ए चाइल्ड व्हाट कैन नॉट डू एलोन निजे करि पारे नाही व्हाट कैन डू एलोन सेटा जेडी दैट इज जोन ऑफ फैक्चुअल डेवलपमेंट जोटा चाइल्ड निजे करि पारिबो then a child can help with others that is called JPD बा zone of proximal development एवं सही other जे सी होछने MKO more knowledgeable others and सही MKO कर support टाको आमे कहूचे कोन ना scaffolding बा temporary support और temporary help एवं सी से support help को gradually withdraw करि दियंती जेते बेले गोटे particular छुआ सही attainment level को पहुंची जाई थाए ओके Next asila in the context of zone of proximal development JPD more knowledgeable others are best described only adults or teachers who possess formal certification now peers or individuals with a higher skill level in a specific task digital tools and AI certified explicitly older sibling who had already passed the same graded level कोटा हवा Now option B, peers or individuals with a higher skill level in specific tasks. Okay. Next आसिला कौन 14 number which of the following statement best captures the relationship between language and thought in Vygotsky's theory. Thought precedes language. Language is merely a vehicle for expression. Now language and thought develop independently and never merge. Now language is the primary tool that transforms external experience into internal thought. Now cognitive development is purely biological and unaffected by linguistic tools. Code hava okay
Very good. Language is the primary tool that transport external inference to internal thoughts. Okay. Next आसला कौन ना Vygotsky's theory differs from Piaget primarily because of Vygotsky कौन पाई differ करी था आंसर दिया ना emphasize the role of biological maturation in cognitive stages ना believe that learning precedes development through social interaction now argued that children learn best when working in total isolation now focused exclusively on the motor skill of individual. Very good. तमने option B कहलानी माउ कुआड जिबी 16 number in a classroom a teacher noticed that a student can solve basic algebraic questions alone but needs guidance for word problems. According to Vygotsky, the gap between these two levels of performance is identified as scaffolding limits, the plateau of cognitive stagnation, the actual development level, the zone of proximal development. कोटा अब 16 number obviously the zone of proximal development. Very good. With guidance gap जोठी असला gap between children can एटी gap ही दे देजे सेटा हमको hints दोछ कि जेपीडी कि जेतबे gap आसीबो what a child can do and what a child cannot do alone जो gap ता आसी गला that is called JPD zone of proximal development. Okay. Next asla कौन ना Vygotsky argued that internalization is the process through which a child learns to play alone without needing peers. Biological instincts are suppressed by social norms. Information is memorized through repetitive rote learning. Now social activities are transformed into mental functions. कौन होगा 17 number? Next jiba now which of the following is an example of cultural tool in Vygotsky's theory that assist in cognitive development? A mathematical numbering system, now genetic predispositions for high intelligence, a child's innate reflex to grasp subject, now physical growth during adolescence. Code haba a mathematical numbering system, now genetic disposition higher intelligence. A child's innate reflex to grasp objects. Okay. Next asla kauna a teacher uses reciprocal teaching where students take turns leading to discussion on a text. This practice support Vygotsky ideas. Vygotsky करा जो reciprocal teaching सेटा kauna na standardized testing is the best measure of intelligence. Na collaborative dialogue promotes higher order thinking. Na learning is a solitary process of discovery. Na children should only learn from adults. Very good. 19 नंबर बी जोटा कि से कही कौन ना कोलाबोरेटिव डायलॉग रेसिप्रोकल टीचिंग माने कौन जो डिस्कशन बा क्वेश्चन आंसर माध्यम रे हमें पढुछे बियॉन्ड द क्लासरूम लर्निंग थ्रू से जोटा जीव डायलॉग प्रमोट्स कौन हायर ऑर्डर थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट सरी ही गला एबे पुनी कहबो एते जल्दी सरी गला आज बहुत ही जल्दी सरी गला एंड यस
एनी डाउट रिगार्डिंग पियाजेट एंड वाइगोट्स्की तो आम डिस्कशन करबा जदि किछि पियाजेट एवं वाइगोट्स्की रिलेटेड अछि एंड जो मानकर कंफ्यूजन होची थरा कंफ्यूज ओके आउ थरे बुझाई दबा यस तो बेसिकली एठी मु कहबी पियाजेट आ वाइगोट्स्की थ्रो रे हमकु कोन मने रखियार अछि ना जेतेबेले पियाजेट थ्योरी आसुची सेतेबेले हमकु तांकर की कांसेप्ट गुडा को मने रखियार अछि जो भी एग्जाम हो तमरा बीएड एग्जाम हो तमरा सीटी एग्जाम हो तमरा ओटीडी एग्जाम हो तमरा सीटेड एग्जाम हो तमरा एसएसबी टीजीटी हो तमरा जूनियर टीचर हो तमरा दुनिया रो जे कोनोसी टीचिंग एग्जाम हो जेतेबेले हमें तो ठीक अच्छे आमे कौन करबा ना सेते बेले हमको मन रखियार अछि की कांसेप्ट ऑफ पियाजेट तो पियाजेट कर जोटा रहूची तो सेई जिंस रे हमें की कांसेप्ट मन रखले हमें मन रखिबा कोन ना हमको एठी मन रखियार अछि स्कीमा कोन असिमिलेशन कोन अकोमोडेशन कोन अडैप्टेशन कोन आ इक्विलिब्रियम कोन ओके एतिके सरिला परे पियाजेट करो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो आमको मन रखियार चारिटा स्टेज एसपीसीएफ हिसाब रे मन रखी दबो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट एवं कोन ना फॉर्मल ऑपरेशनल समस्तंकर एज लेवल टाको मन रखिबो काहेकि ना परीक्षा रे एज लेवल आसुची ता परे आमे कोन करबा ओके ठीक अछि विजय लक्ष्मी एज लेवल परे आमे कोन करबा मन रखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेप तो को स्टेप रे पियाजेट कर कोन कैरेक्टरिस्टिक काहेकि ना पियाजेट को थ्योरी याठू अधिक क्वेश्चन सामर सेमिति किछि आसुनी कैरेक्टरिस्टिक्स रे जेमति कि हमें कहबा ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज रे हमर आसुची कोन ना हमर सेंसरी मोटर स्टेज रे आ डिफर्ड इमिटेशन सरीला प्री ऑपरेशनल कहले सेठी तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होउची सेटा तार इरिवर्सिबिलिटी तार से जो जिंसटा कोन होउची ना सेरिएशन होउची ता सहित से कोन क्लासिफाई करि पारुनी तार सेंट्रेशन आसुची तार कोन आसुची ना सेंट्रलाइजेशन गोटे जिंस को थिंक करि कि रहिबा इरिवर्सिबिलिटी से को जिंसटा जानि पारुनी तापरे तार इगोसेंट्रिज्म आछी जेमति कि पचारले मैम इगोसेंट्रिज्म बुझाई दियंतु इगोसेंट्रिज्म मतलब होची कि चाइल्ड ओनली थॉट्स इन हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू माने मु जदी एबे प्री ऑपरेशनल 2 रु 7 वर्ष बयस भीतर अछि मु भाबेबे कि मु जोटा भाबुची सेटा ही ठीक सेटा ही समस्ते भाबुछंदी मु अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू भाबेनी से टाइम रे काहा को कोन लागुची की कोन फील करूची फॉर सपोज गोटे बेसिक एग्जांपल नबा मु भाबुची कि आमे जो भाबु सब बेले आमे जुआडे जुआडे जाउची कोन जनटा आमे पाखरे चाली चाली आछी पिला मुंडरे एई थिंकिंग ता आसे कि मु जोवाडे जाउची जनटा मो संगे चाली चाली आछी ना जनटा सेई जगह रे ही अछि बस सब जगह रे से देखा ए कांसेप्ट आमे सेही जिंस रे बुझी पारि न थाउ तो ताकू कुआ जाय इगोसेंट्रिज्म ता देहरे आउ गोटे अछि कोन ना एनिमिज्म कोन ना जो गुडा निर्जीव वस्तु इनएनिमेट थिंग्स से गुडा को सजीवा भाबिबा सपोज मो कंढेई को झियो बोली भाबिबा कंढेई मांकड़टा को सतरे मांकड़ बोली भाबिबा कंढेई भालुटा को सतरे भालू बोली भाबिबा ताकू जदी हमें गोटे चटकणा मारी दबा छोटो छुआ माने से स्टेज रे कांदीबा को लागंती ताकू खाइबा को दियंती ताकू सुआइले माने मी सोई पड़ंती तो सेही जिंसटा होची एनिमिज्म माने इनएनिमेट जिंस को निर्जीव जिंस को से माने सजीव बोली भाबी थांती ओके तापरे आसिला कोन ना हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आसुची 7 रु 11 इयर्स तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को कोन ना 7 रु 11 इयर्स रो कैरेक्टरिस्टिक गुडा हमें कहिले आसीबो रिवर्सिबिलिटी क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांजिटिविटी सब बेले ट्रांजिटिविटी रु हमर टीचिंग एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ताले ट्रांजिटिविटी कोन ना ट्रांजिटिविटी होउछे जोटा कि दुईटा ऑब्जेक्ट भीतर रो रिलेशनशिप को बताई थाए ओके ट्रांजिटिविटी होउची कोन ना दुईटा ऑब्जेक्ट रो रिलेशनशिप को जे बताए ऑब्जेक्ट रो रिलेशनशिप सेटा को हमें कहूचे ट्रांजिटिविटी फॉर एग्जांपल हमें जेमति कहूचे ए बी थारु बड़ बी सी थारु बड़ ताले ए और सी भीतर रिलेशनशिप कोन एई भलिया क्वेश्चन जेते बेले आसीची हमें कहूचे ट्रांजिटिविटी क्लासिफिकेशन हैला लॉजिकल थिंकिंग हैला तो इस कंक्रीट जिंस गुडा को जानिबा बुझिबा ए सब जिंस ए स्टेज रे हेई थाए
देन आसिला कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हमर कौन हुए तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हमर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग ए सब जिनस गुडा का डेवलपमेंट हेई थाए जो थे कि आम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करि पारू इजीली हम थिंकिंग प्रोसीजर यूज करके आम सॉल्व करि पारू। ओके तो एतिकी सरिले हम पियाजेट थ्योरी शेष। तापरे आसला वाइगट्स्की थ्योरी। वाइगट्स्की थ्योरी रे कोन ना हमर तीनटा मेन कांसेप्ट आसुची कोन स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग माने होची टेम्पररी हेल्प बा सपोर्ट जोटा कि छुआ तार फाइनल पाथ बा गोल रे रीच करिया पर्यंत आमे छुआटा को बुझौचे देन आमे ग्रेजुअली से जिनसटा छाड़ी दउछे। देन कोन स्कैफोल्ड के करथानी ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स जी आम ठारू अधिक नॉलेजेबल थांती सी हमको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करी थांती। तो सेही मोर नॉलेजेबल अदर्स किए मे बी पीयर्स मे बी पेरेंट्स मे बी कम्युनिटी रो कोन से ग्रुप टीचर्स केही भी हेई पारंती मे बी हम एल्डर्स मे बी हमर जो माने जूनियर्स रहले से माने भी हेई पारंती केही भी जी आम ठारू सेही पर्टिकुलर टैक्स विषय रे बेसी जानि छंती। देन कोन सेही जो प्रोसीजर टा को एमकेओ रो प्रोसीजर टा को हमें कहूचे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेपीडी। ताले जेपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन ना एमिति टैक्स थाए जोटा कि चाइल्ड केभे भी करि परिबो नाही आ एमिति किछि किछि टैक्स थाए जो जे चाइल्ड करि परिबो जोटा कि हमें कहूचे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तार जो जे डेवलपमेंट हेछि तार मेंटल लेवल जो जे उन्नति हेछि से करि परिबो। तापरे ए चाइल्ड कैन डू विथ द हेल्प ऑफ अदर्स जोटा कि से एमके रो हेल्प द्वारा करि परिबो दैट इज कॉल्ड जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एतिकरे तांकर मेन कांसेप्ट सरुची या सहित आहुरी कोन अछि ना हमर स्पीच विषय रे कहिसंती प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच आ गुटे सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच रे तार कोन हुए इंटरनलाइजेशन प्रोसेस हुए सोशल स्पीच आ गुटे हला इनर स्पीच तीनटा स्पीच विषय रे कहिसंती। तापरे आउ कोन रहइला ना से कहिसंती कि हमर कल्चर सोसाइटी कोलैबोरेशन ग्रुप वर्क सोशल वर्क ही हमकू कौन करे ना हमर कॉग्निटिव थिंकिंग रो डेवलपमेंट पाई हेल्पफुल होई थाए। तो एतिके बेसिक जिंस रहइला पियाजेट और वाइगट्स्की। पियाजेट फोकस करिसंती बायोलॉजिकल डेवलपमेंट व्हेयरएज ये कौन फोकस करिसंती वाइगट्स्की ना सोशल डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट आमे सोसाइटी लैंग्वेज एवं कल्चर द्वारा ही हमर नॉलेज रो डेवलपमेंट करि थाउ किंतु पियाजेट सेठी बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऊपर फोकस करिसंती। देन आउ गोटे क्वेश्चन मध्ये तम परीक्षा रे आसुची कि पियाजेट को थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कोन कहा जाय ना पियाजेट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आमे डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस कहूचे। डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस तो से डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट काहे की कहूचे ना हमरो डेवलपमेंट आमे जानि जे इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर्स होम एंड एट एट द टर्म। तो मदर्स होम रो स्टार्ट है कि हमरो मसाणी भूइरे सरी थाए किंतु सीए कहिसंदी डेवलपमेंट गोटे स्पेसिफिक स्टेज रे स्पेसिफिक एज रे हेइ थाए तापर आ गोटे नुवा डेवलपमेंट हेइ थाए किंतु हमें सेमिति कहि परिबा नहीं। हम थ्योरी रे हमें पढिचे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अछि समस्त एज स्टेज एनवायरनमेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जेनेटिक बैकग्राउंड बहुत रीजन लागि परस्पर ठारु भिन्न हेइ थांती तेनु हमें कहि परिबानी पर्टिकुलर स्टेज रे गोटे छुआर पर्टिकुलर डेवलपमेंट हेइ पारिबो सेथिलागी ए स्टेटमेंट आ कटा जाईची तो तांकर डेवलपमेंट प्रोसेस गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नुह डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके थैंक यू एवरीवन देखा बा।